अच्छा ओके वेलकम टू द सेकंड सेशन। और प्रीवियस सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे हाउ वी कैन असेस द criticals the clinical skills as well as the factual knowledge of our undergraduate students. तो इनिशियल जो पहला सेशन था उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट डिस्कस की, जिससे हम अपने स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है वो असेस कर सकते हैं। इस सेशन में हम थोड़ा सा उसको रिकैप करेंगे और दो टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो प्रीवियस सेशन से रह गई थी वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ फिर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन असेस द क्रिटिकल स्किल्स ऑफ आवर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। चेकलिस्ट क्या होता है या ग्लोबल रेटिंग क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और एग्जांपल के साथ हम फिर ऑस और 360 एलिवेशन प्लस इसके अलावा और जो जितनी भी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस सेशन में हम बात कर रहे थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का। तो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दीज बोथ आर द टाइप्स ऑफ द ओपन एंडेड क्वेश्चन, और इसके लिए दे आर have less reliability as compared to the multiple choice question, and we have discussed in detail in the previous session that what we mean by the less reliability and the high reliability. दोनों के लिए एक चीज जरूरी होता है एंड दैट इज कि जब भी हम एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्वेश्चन के साथ साथ वी हैव टू सबमिट या एटलीस्ट वी हैव कीप द आंसर इन अ स्ट्रक्चर फॉर्म, दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चरिंग। तो अगर स्ट्रक्चरिंग है तो फिर इसकी तो जो रिलेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी जो है बढ़ जाती है, बट दैट इज ऑन द मार्किंग साइड। स्टूडेंट जब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें उसकी रिलेबिलिटी उतनी नहीं होगी जितना जो है बाकी टाइप ऑफ असेसमेंट के, जैसे आर टाइप एमसीक्यू है या ईएमआई है या ए टाइप एमसीक्यू या की फीचर्स है। लेकिन एक दो चीजों की जो अक्सर गलती हो जाती है हम टीचरों से कि ईदर वी आर गोइंग टू अंडर स्ट्रक्चरिंग ओवर स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर फॉर दिस शॉर्ट आंसर और द लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ी सी हमें एहतियात करनी चाहिए कि जब हम अपनी आंसर स्ट्रक्चर करते हैं सो इट शुड बी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड। न सिर्फ इतना ये शॉर्ट हो कि इसमें जो इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है वो हम शामिल ना करें, और नहीं इतना टू मच लॉन्ग हो कि जिसमें से लेस इम्पोर्टेंट आइटम कंटेंट जो है वो भी इसमें से आ जाए। तो ये चीज़ ही बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कि ईच मार्कर जो है ईच एग्जामिनर शुड मार्क द सेम क्वेश्चन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ये भी हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। तो ये कुछ डबल मार्किंग जो है ये भी पॉसिबल है। डबल मार्किंग से ये मतलब है कि एक ही क्वेश्चन जो है ये दो टीचर्स जो है ये उसके करे, उसके सिर्फ ये होगा कि बट दैट इज पॉसिबल व्हेन वी हैव मल्टीपल एग्जामिनर्स। अगर हमारे पास एग्जामिनर्स ज्यादा है तो डबल मार्किंग जो है ये हो सकता है कि जिसमें से एक क्वेश्चन जो है दो इंडिपेंडेंट चेक कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक फायदा होता है कि थोड़ा सा जो रिलेबिलिटी होती है टू द चेकर्स ये थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऐसे क्वेश्चंस ये तब रिक्वायर होते हैं व्हेन द objective is to assess the students for the processing, summarizing, evaluating, supplying are such long information related to the patient situation, related to some clinical case. But as compared to the short answer question, the KFQ and other MCQs type, they require much more time to answer these questions, and that's why they are nowadays not in predictors. The long essay question, and rather than the short essay question as well as the multiple choice question, they are in predictors. Because of this, they have too much. The less reliability per hour as compared to the short essay question. Structuring, which we discussed previously, that is the issue for both the short and the long essay question. The next method of assessment of knowledge is the modified essay question. This is a special type of the essay question
So we discussed two or three of the that R type, the A type, and then the key feature question. And now we have discussed three types of essay question: the short essay question, the long essay question, and the modified essay question. Now, what we mean by the modified essay question, इसमें एक केस प्रेजेंट किया जाता है और उस केस के बाद कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चन होती हैं और इसमें ये होता है कि हर एक क्वेश्चन जो है ये दूसरे क्वेश्चन से इंटरकनेक्टेड होता है और अगर स्टूडेंट पहले क्वेश्चन का आंसर गलत देता है तो फिर उसके सारे क्वेश्चन जो है गलत होंगे। मिसाल के तौर पर एक आसान सा एग्जांपल है कि केस सिनेरियो है और उसमें स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट आर द पॉसिबल डायग्नोसिस। अब अगर स्टूडेंट ने यहाँ पे डायग्नोसिस जो है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन उसने जो है वो डायग्नोसिस गलत लिख दिया तो नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि provide the differential diagnosis या the special test या the examination या the lab test used for that diagnosis। तो अपनी डायग्नोसिस को देखते हुए वो आंसर लिखेगा। उसके बाद अगर मैनेजमेंट की बात आ जाती है तो मैनेजमेंट अपनी ही डायग्नोसिस लिखेगा जो उसने वहां पे सेलेक्ट किया है। तो इसलिए देयर इज इंटर कनेक्शन बिटवीन द क्वेश्चन और ये जो इंटर कनेक्शंस होती है इंटर क्वेश्चन कनेक्शंस होती है ये स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि देयर इज नो चांसेस ऑफ दैट रेडिबिलिटी। एक बार वो एक आंसर लिख देते हैं फिर एक दूसरा लिख देते फिर तो इट मीन they should be very careful while answering the first question and if they are right at the uh, initial question so they will be in the right direction but if they write the wrong option the wrong diagnosis the wrong answer to the first initial question so obviously they will be in the wrong direction. So students are provided with a limited amount of that patient data and then they have to answer the series of questions and all those questions will be related to the data which is being provided in the top of that question. A well-written MEQ assesses many aspects like the reasoning, clinical reasoning skills, the understanding the concepts, the differential diagnosis, the decision about which treatment is the most appropriate, the differential diagnosis. So rather than just checking the factual knowledge, all these can be checked through the modified essay question. The factual knowledge that is best checked by through the A type and the R type question. But if we are going to check the clinical decision making and the clinical reasoning of the student, then the MEQ as well as the next SCT, they are the best option. But again, as we discussed earlier about regarding the short is equation and the long is equation, the modify and S equation, the उनकी भी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो हैं ये थोड़ी सी वीक है और यही वजह है कि ये एग्जाम में यूज नहीं होती दे आर नेट इन प्रैक्टिस और इनकी जगह जो है ये के एफ क्यों जो है विच इज द की फीचर क्वेश्चंस ये उन्होंने ये जगह ली है दे हैव बीन यूज्ड नाउअडेज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ दीज मॉडिफाइड एसे क्वेश्चन। Psychometric properties से मुराद we are meaning that validity and reliability of that question. This is an example. Suppose the Mr. A tells you that she had catarrh for years and that in the last 2 months she has had headache made worse by blowing her nose. अब यहाँ पे पहले जो है केटा जाता और अब नाउअडेज उसको इन 2 महीनों से हेडेक भी है जब भी वो ब्लो करती है नोज को। सो टू कॉमन डायग्नोसिस माइट यू कंसिडर टू बी द मोस्ट लाइकली एट दिस स्टेज एंड गिव 3 symptoms और साइंस इस अगर यहाँ पे इस बेस पर यहाँ पे ये गलत डायग्नोसिस लिख दे तो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स अपनी ही जो आंसर उन्होंने लिखा है जो डायग्नोसिस उनके जहन में आया है उन्हीं डायग्नोसिस के साइन एंड सिम्टम्स लिखेंगे। So if they have wrong diagnosis, so obviously their sign and symptoms will be also the wrong. So that's why the question in such modified essay question, they are interconnected. All the questions, there are 3, 4 questions which are related to the data being shared above and they are all are connected with each other. This is the new method which is not in practice, which is new in the examination, but that has a which has very high reliability and it is very इसकी validity भी बहुत अच्छी है।
کیونکہ یہ وہ چیک کرتا ہے جو ڈاکٹرز روٹین میں کرتے ہیں، یعنی یہ پریکٹیکل سکل جو ہوتے ہیں، جو کلینکل ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہیں، یا جو کلینکل ریزننگ ہوتی ہے، ڈفرینشیل ڈائگنوسز ہوتی ہیں، یہ جس طرح ریئل لائف میں ہوتے ہیں اسی طرح کی سچویشن جو ہے اس میں چیک کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، اور اسپیسیفکلی یہ ایسی سچویشن کو اسیس کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں جو انسرٹن سچویشنز ہوتے ہیں، جو انسپیکٹڈ ہوتے ہیں. سپوز ایک ٹپیکل کیس، مطلب جو روٹین میں وہ ایک کیس ہوتا آتے ہیں اور وہ دے آر یوز ٹو سچ کیسز، بٹ اچانک اس میں ایک کیس آ جاتا ہے جس میں سے سم تھنگ نیو از پریزنٹ. تو ناؤ اس کی ڈیسیشن کیا ہوگی، اب اس کو کس طرح ہینڈل کرے گا. تو اس طرح کی سچویشن کو چیک کرنے کے لیے سچ انسرٹن اینڈ دیٹ ایٹیپیکل انسپیکٹڈ سچویشن، نیو سچویشنز کو ٹیکل کس طرح کریں گے، اس کے بارے میں یہ کوشچن ہوتے ہیں. سو دس از ٹوٹلی اے نیو فارمیٹ، اور اس کی بہت زیادہ جو ایکسیپٹنس بیکاز آف اٹس ہائی ویلیڈیٹی جو ہے، اٹ از بین یوزڈ کوائٹ یوزڈ ان دا ڈفرنٹ ایگزامینیشنز. تو اس کی ایک ہی ججمنٹ، اس کی پرنسپل یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایک ججمنٹ، ان کی جو ایگزامینیز کی جو اسٹوڈنٹس کی ججمنٹ ہوتی ہیں، اس ججمنٹ کو پھر ایکسپرٹ کی ججمنٹ کے ساتھ جو ہے ایک چیک کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ہاؤ مچ ایگریمنٹ از دیئر. دیٹس وائی دس ٹیسٹ از نون ایز دا اسکرپٹ کنکارڈنس ٹیسٹ. کنکارڈنس سے مراد یہ ہے ایگریمنٹ کہ کس حد تک وہاں پر مماثلت ہے، وہاں پہ کرسپونڈنگ کی جو ہارمونی کتنی ہے. یعنی اسکرپٹ جو ہے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک نیٹ ورک یا آرگنائزڈ نالج جو ہوتی ہے ان کی ایک نیٹ ورک کو اسکرپٹ کہا جاتا ہے. اٹس اے میڈیکل ٹرم کامنلی یوزڈ. یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک پیشنٹ، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک پریکٹیشنر ہے، اور وہ پیشنٹ چیک کر رہا ہوتا ہے، اور وہ مطلب جو ای این ٹی ہے اس کے پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں پیشنٹ چیک کر رہا ہے. اب ایسے میں ایک پیشنٹ آ جاتا ہے جو ان کی کچھ سروائکل ٹیومر ہے، سروائکل ماس کے ساتھ آ جاتا ہے. ناؤ اس سے پہلے جتنی بھی پیشنٹ ہے دے آل آر ریلیٹڈ روٹین کیسز تھے اب دا ایئر نوز اینڈ تھروٹ، بٹ دس از اسپیسیفک کیس وچ ہیونگ دا سروائکل ماس. تو اس کی پوری ڈیویشن آ جائے گی، اس کا پورا جو مائنڈ ہے وہ چینج ہو جائے گا. اب اس کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ تو یہاں پہ اس کی ایک الگ سے نیٹ ورک شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ دیٹ آرگنائزیشن دیٹ آرگنائزنگ دیٹ نیٹ ورک آف نالج، جس کو پھر اسکرپٹ کہا جاتا ہے. تو اس کی ایکسپرٹ جو ہے پھر انہوں نے ایک اسکرپٹ بنایا ہوتا ہے، اور اس کو پھر اس کے ساتھ چیک کیا جاتا ہے کہ ہاؤ مچ دیئر از ایگریمنٹ بٹوین دا ایگزامینر اسٹیٹمنٹ اینڈ دا ایکسپرٹ اوپینین. مثال کے یہاں پہ ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کریں گے، اور یہاں پہ اس ایگزامپل میں، لیکن ایگزامپل سے پہلے ہم یہ ڈسکس کہ اس کی 3 پارٹس ہوتے ہیں اس کویشچن کی. پہلے کویشچن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سچویشن، ایک آپ کے سامنے ایک سچویشن ہے، اور آپ کے ذہن میں آپ نے ایک سوچ وہاں پہ بنائے ہوا ہے، لیکن ابھی آپ نے ایکشن آپ نے لیا نہیں ہے کہ آپ کو ایک نیو انفارمیشن مل جاتی ہے. تو اس نیو انفارمیشن کے بعد آپ اپنی پریویس جو آپ کی سوچ تھی، جو آپ کا ایک پہلے سے آپ نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا تھا، آپ اس کے ساتھ آپ کس حد تک جو ہے اس پر مینٹین رہیں گے؟ کیا آپ اپنا وہ خیال چینج کریں گے؟ کیا آپ جو ہے unable to decide، یا جو ہے still you are on your own thinking جو اس نیو انفارمیشن کے بعد جو ہے آپ کی تھی؟ مثال کے طور پر یہاں پہ ایک کویشچن ہے، یہ ایک سینیریو ہے، لیکن سینیریو سے پہلے صرف یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے آپ جو ہے ایک سوچ رہے تھے کہ سیٹی، اس کے لیے ایک سیٹی آرڈر کر لو اس پیشنٹ کے لیے، جس کے ڈیٹا جو ہے یہاں پہ کیس ڈسکرائب کی گئی ہے، کمیونٹی بیان کی گئی ہے، جو ایک 72 ایئر اولڈ وومن ہے، اور اس میں جو ڈائبٹیز بھی ہے، اور اس کو ہارٹ پرابلم بھی ہوئی تھی، اور شی از اے اسموکر ایز ویل. آپ یہاں پہ یہ مختلف ان کی میڈیکیشن میں جو ہے مارفین سلفیٹ اور باقی چیزیں ہیں. تو آپ سوچ رہے تھے کہ اس کی ایک چونکہ اب یہ ناؤ جو اس کا مین کمپلین اب ہے، دس از فار دیٹ ایکیوٹ شارٹنس آف بریتھ. تو آپ اس کا کمپیوٹر ٹوموگرافی آرڈر دے رہے تھے، لیکن پھر آپ کو ٹیسٹ رپورٹ مل گئی، اینڈ دیٹ ٹیسٹ رپورٹ واز کہ اس کی جو سیرم کریٹینین لیول تھا دیٹ واز
110 उसका पर लेटर इसका था, इतना माइक्रोमोल था। अब इसका 110 क्रिएटिनिन लेवल के बाद क्या आप कंप्यूटर टोमोग्राफी ऑर्डर करेंगे या जो है इसको कैंसिल करेंगे? पहले आप जो पहले आपकी थिंकिंग थी। तो यहाँ पे एक लाइकर्ट स्केल जो होता है उसकी बेस पर स्टूडेंट हैव टू आंसर कि अगर इस सिचुएशन के बाद स्टिल दे आर थिंकिंग दैट ordering a computer tomography is the right decision, and if they are 100% sure, so they will just check the plus two, and if they are 50 to 60 70% sure, so they will check the plus one. But if they are completely blank and they don't know, now after if the patient's creatinine level is 110, now either it is contraindicated, is indicated, they are unknown, so it means they don't know the answer, so they will check the zero. But if they will think that now the CT is contraindicated, so either they will then check the -1 or -2. Similarly, the patient was on the basis of these symptoms, he was going to order a VQ lung scan, but he find that there is a chronic obstructive lung disease history भी उसकी है. So after that COPD history, either lung scan possible है कि नहीं है, so he will just check, he will go for the +2 +1 -1 -2 or 0. Again +1 +2 minus mean still he think that yes, the initial decision is right, and still he will take the decision even after knowing this fact. Similarly, वो दूसरा तीसरा जो डिसीजन ले रहा था कि if the student is thinking ordering a D-dimer test and then he found that the patient medical record shows that she has ovarian cancer as well. So either now D-dimer test will be ordered उसकी जो है indicated है या can't indicated है. तो ये जो है इसको कहा जाता है the script concordance test, or student जो है they have to answer either on the Likert scale in the minus side or the plus side. Plus side mean it's still after the new information, still they will do as they were thinking, and the minus side it mean now they have cancelled what they were thinking after the new information, because with the presence of this information the initial investigation जो order कर रहा था that is contraindicated, so then he will obviously go for the -1 or -2, and then these agreement जो examinees ने बनाए हैं they will be checked with the that उसकी concordance check की जाएगी, उसकी agreement check की जाएगी with the experts, वो क्या कहते हैं, और फिर उसके साथ उसकी मार्किंग हो जाएगी. तो ये बहुत ज्यादा जो है वैलिड होती है, उसकी कंटेंट वैलिडिटी बहुत अच्छी होती है. कंटेंट वैलिड से मुराद ये इसमें जो कंटेंट होती है वो वही कंटेंट होती है जो रूटीन में जो डेली एवरीडे डॉक्टर्स करते हैं in their wards, in their practice. So that's why if such questions they are added to the students examination, so उससे उसकी जो strength है और उसकी जो validity है उस टेस्ट की ये बढ़ जाएगी. But as we discussed, this is new to the examination, that's why it is less in practice. So that was the end of the that's checking the knowledge of the students. Various methods we have discussed, starting from that A-type MCQ, then the R-type MCQ, then the key features question, the short essay question, the long essay question, the modified essay question, in the end, the skip concordance test. This is the second example of the same SCT. So now we will go for the next, which is the assessment of performance. अगर यहाँ पे हम इस सेशन में कोशिश करेंगे कि इसको कवर कर लें, and if there was need of another session, so then the link will be sent to all of you for the third session, short session, and then that will be the end of the methods of assessment for the undergraduate students. So we are done with the types of assessment used for the checking the knowledge, assessing the knowledge of the undergraduate students. And now we will discuss the different methods used for the assessment of the undergraduate students for their clinical skills. So two categories, we can assess the student for their clinical practice in two categories, and these are the checking the assessment of clinical skills in the controlled environment in the
in the university labs, in the simulated models, on the simulated models, and as well as the assessment of the examinees in the real life environment with the real patient in the hospital. Chunki we are discussing the undergraduate student examination and the methods, so that's why we will mostly just limited and restricted to the that performance in vitro, which is actually the assessment of student in simulated or standardized condition. अब दोनों जो है ये परफॉर्मेंस इन वाइट्रो एंड परफॉर्मेंस इन व्यू जो है ये दोनों जो है दे इन्वॉल्व डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल क्रिटिकल स्किल्स वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे और एज वेल एज बिहेवियर एज वेल एंड द एग्जामिनर विल ऑब्जर्व एंड अकॉर्डिंग टू देयर एग्जीक्यूशन जो है उनको मार्क्स दिए जाएंगे. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो आ जाती है उसमें आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि समटाइम्स not every aspect of that execution of that performance is being observed और इसी वजह से जो है lack of that perfect and complete observation की वजह से इसकी थोड़ी सी जो है वो वैलिडिटी जो है कम हो जाती है और इसलिए इसमें इसकी वैलिडिटी को इंक्रीज करने के लिए इसकी रिलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए न सिर्फ ये कि डिफरेंट चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल दैट शुड बी यूज्ड बल्कि इंडिपेंडेंट मल्टीपल एग्जामिनर शुड बी यूज्ड यानी एक स्टूडेंट जो है और अगर लेकिन ये तब पॉसिबल है व्हेन देयर इज मल्टीपल एग्जामिनर्स की अवेलेबिलिटी अगर है कि एक स्टूडेंट ही इज एग्जीक्यूटिंग प्रैक्टिकल स्किल्स कर रहा है एग्जीक्यूट कर रहा है एट द सेम टाइम टू इंडिपेंडेंट ब्लाइंड एग्जामिनर्स. इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि they will be unaware of each other that how much marking they are giving to the student. तो अगर ये इस तरह ब्लैंड है एक दूसरे से तो इससे क्या होगा कि दोनों ऑब्जर्व करेंगे और फिर दोनों के मार्क्स का एवरेज अगर आ जाता है so that will be a much how justified observation justified from not only that single but all the students which is being testing which is being assessed for their critical. लेकिन ये जरूरी तब ये पॉसिबल है when we have multiple examiners. So सबसे पहले before going to the different methods used for assessment हम बात करेंगे चेक लिस्ट पर रेटिंग स्केल पर कि इन दोनों में ग्लोबल रेटिंग स्केल या चेक लिस्ट में क्या डिफरेंस है इसकी कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों के साथ अभी हम शेयर करेंगे. तो और ये चेक लिस्ट जो है ये या ये रेटिंग स्केल जो है ये मुख्तलिफ मेथड्स में यूज होती है ऑस्की में यूज होती है आस्पी में यूज होती है. हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे इन द objective structure clinical examination and the practical examination in the upcoming weekend inshallah. So ये चेकलिस्ट जो है रेटिंग स्केल नॉट ओनली आस्पी एंड आस्पी में यूज होती है बल्कि डाउट्स में भी यूज होती है पीर असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट पेशेंट सर्विस के लिए भी यूज की जा सकती हैं. जैसे हमने पहले कहा कि परफॉर्मेंस असेसमेंट जो है इसकी फेस वैलिडिटी जो है ये बहुत ज्यादा अच्छी है बिकॉज इसमें वही चेक किया जाता है जो actually doctors that do every day in the hospital but there are some problems in this assessment and these problems that is the lack of standardization कि नहीं बाज़ औक़ात अगर हम अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स की असेसमेंट करते फॉर द क्लिनिकल स्किल्स तो उस तरह का माहौल जो है नहीं होता जिस तरह के रियल लाइफ एनवायरनमेंट या रियल लाइफ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट जिस तरह होता है. तो एक तो ये कि वहाँ पे जो स्टैंडर्डाइजेशन है या सिमुलेशन है दे आर नॉट क्लोज टू द रियल लाइफ. तो अक्सर इसकी वजह से इसकी रिलेबिलिटी तो थोड़ी सी दो दे हैव वेरी हाई फेस वैलिडिटी लेकिन इन प्रॉब्लम की वजह से इसकी रिलेबिलिटी जो है तो मुतासिर होती है और इसकी वजह से इसकी रिलेबिलिटी कम होती है. इसके अलावा बाकी जो प्रॉब्लम्स आते हैं beside the lack of standardization that is the limited observation and the limited sampling of skills. जैसे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि एक प्रॉब्लम विद सच असेसमेंट मेथड इज कि अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है ये एक स्टूडेंट का सही तरीके से ऑब्जर्वेशन हो रही है दूसरी का उससे कम हो रही है तो ऑब्वियसली दोनों के मार्क्स में देयर विल बी डिफरेंस सो दैट इज नॉट अ जस्टिफाइड असेसमेंट. सिमिलरली चूंकि इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है प्रैक्टिकल्स के तो इसमें से हम जो सैम्पलिंग वहाँ पे कंटेंट वहाँ पे असेस करना चाहते हैं तो बहुत कम होता है
So that is one of that problem ki we can't assess too many content in a 1 hour or in 1 2 hour session, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है उसमें, तो दैट्स वाई उसमें जो सैम्पलिंग विच हैज बीन checked analysis that is less, और इसकी वजह से that in तीनों reasons, lack of standardization and the restricted or the limited or that unjustified observation and the limited sampling of the skills, इसकी वजह से इसकी रिलेबिलिटी जो है थोड़ी सी कम होती है. बट एज दे ऑल आर डीलिंग विद द things which normally doctors do every day in the hospital, so इसकी validity जो होती है, specifically the content validity, that is very high. तो चेकलिस्ट डिस्कस करेंगे. चेकलिस्ट जो है उसके बाद जो है हम ग्लोबल रेटिंग की तरफ भी आएंगे. चेकलिस्ट बेसिकली जो एक पहले से स्ट्रक्चर होती है कि जिसमें से डिफरेंट स्टेप्स लेके होते हैं, और फिर एग्जामिनर्स देखता है कि जो जो ये प्रोसीजर में जो रिक्वायर्ड स्टेप्स होते हैं, क्या वो सारे स्टेप उसने किए हैं, या कुछ स्टेप्स या कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो उसको करनी चाहिए थी उसने नहीं किए, तो फिर उसके मुताबिक उसकी मार्किंग कर लेता है. अब सम टाइम इस तरह होता है कि बाद चेकलिस्ट दे हैव टू मच स्टेप्स जिसको हम 5 मिनट या 4 मिनट में वहां पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते. जैसे अगर यहाँ पर आप देखें इसमें एक मिनट, वी हैव टू ओके, Yes, यहाँ पे देखिए we have 26 steps and this checklist used for that in epidural anesthesia. So 5 मिनट में अगर हम स्टूडेंट्स के ये स्किल्स चेक करते हैं कि हम उनकी epidural anesthesia, so it's, अब देखिए यहाँ से शुरू करें कि ensure the patient is positioned and carefully prepares, wash hands and puts. तो ये सारे बहुत सारे हम चेक करें, लेकिन उसमें से अगर थोड़ी हमारी ऑब्जर्वेशन इधर उधर हो गई तो उसमें से बहुत सारे स्टेप ऐसे होंगे जो शायद हम वहां पे ऐसे सही तरीके से ना कर सके. तो ये चेकलिस्ट जो है सम टाइम्स वी जब यूज करते हैं चेकलिस्ट को, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ओवर डिटेल चेकलिस्ट जो है दे शुड बी अवॉइडेड एंड दे शुड नॉट यूज्ड इन द प्रैक्टिकल असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट. इसके बजाय जो है एक और ऑप्शन सोल्यूशन है इस चीज का, दैट इज द ग्लोबल रेटिंग. अब ग्लोबल रेटिंग में जो अच्छी बात ये होती है कि वहां पर ओवरऑल परफॉर्मेंस की भी जो है जजमेंट की जाती है कि इसकी पूरी मतलब एक दो स्टेप्स के बजाय ओवरऑल उसकी A to Z जो परफॉर्मेंस थी, जो उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स डेमोन्स्ट्रेशन थी, दैट वाज क्वाइट गुड, दैट वाज एक्सीलेंट, दैट वाज नॉर्मल, फेयर, एवरेज, दैट वाज पुअर. सो इसमें ये चीज होती है कि उसमें डिसाइड किया जाता है, एग्जामिनर एट द एंड रिपोर्ट कर देता है कि जो उसकी ओवरऑल एग्जीक्यूशन थी, दैट वाज पुअर, दैट वाज गुड, दैट वाज एवरेज, जबकि ये चीज चेकलिस्ट में नहीं होती है. एंड दूसरी जो है ये एक एक स्टेप की जो एग्जीक्यूशन होती है स्टेप को, उसको इसने बेहतर तरीके से किया, उसने बहुत अच्छी तरीके से किया, उसने वो स्टेप जो है बस उसने वो क्या क्या खाना पूरी की, या उसने सिर्फ उसने फॉर्मेलिटीज पूरी की, या उसका वो स्टेप जो है वो सही तरीके से नहीं था तो पुअर था. तो हर एक स्टेप की फिर वहां पे वो क्या कहते हैं ग्रेडिंग करेगा, और इसी ग्रेडिंग की वजह से उसको कहा जाता है दैट ग्लोबल रेटिंग स्केल. यहाँ पर अगर हम देखें इसी एनेस्थीसिया के साथ, ये देखिए दिस इज द ग्लोबल रेटिंग. ये प्रिपरेशन फॉर द प्रोसीजर, तो ये वहां पर फिर इसको इट इज 1 to 5. अब 5 जो है दिस मीन वेरी हाईली स्किलफुल था, जो अच्छी तरीके से उसने एग्जीक्यूट किया, और उसकी एग्जीक्यूशन जो है ये पूर थी, तो डिड नॉट ऑर्गेनाइज द इक्विपमेंट. तो ये यहाँ से शुरू करके यहाँ से वो करेगा, और इसके बाद जो है एट द एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखिए वेरी पुअर था, ये बस कॉम्पिटेंट था, अच्छा था, एवरेज था, एंड ही वाज क्लियरली सुपीरियर था, यानी ही कंप्लीटली ही वाज टू स्किलफुल. तो इस तरह की जो है ग्लोबल रेटिंग, ये न सिर्फ ये कि दे आर कंसाइज एंड दे आर नॉट ओवर डिटेल, बल्कि इसमें ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस भी जो है ग्रेड होती है, विच इन दोनों चीजों की जो है अक्सर लेकिंग होती है कि उसकी जो लेकिंग होती है वो वहां पे कंसाइजनेस की एज वेल एज ओवरऑल परफॉर्मेंस की भी वहां पर लेकिंग होती है.
تو یہ سم ٹائمس کچھ چیک لسٹ ایسے ہوتے ہیں جو دے آر میڈ فار دا ریئل لائف اسسمنٹ، تو ریئل پیشنٹ کی اسس کے لیے یوز ہوتے ہیں. سو یہاں پہ اس بات کا خیال رکھنا پھر چاہیے کہ اف وی آر یوزنگ سچ چیک لسٹ، تو اس میں سے ان پوائنٹس کو یوزولی وی ہیو ٹو اسکپ جو ایک سیمولیٹڈ یا ماڈل کے لیے یوز. جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں پہ کہیں کہ جسٹیفائڈ دا کیتھیٹر سلیکشن. اب چاہے چونکہ وہ تو ماڈل ہے، کوئی بھی کیتھیٹر وہ یوز کرے تو ضروری نہیں ہے، یا جو ہے سیل دا سائٹ ان اسٹیرائل فیشن. تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم پہ یہاں سے اسکپ کریں گے ود دا ناٹ اپلیکیبل. تو اس سے بھی ہمارے جو چیک لسٹ ہوتے ہیں تھوڑے سے کنسائز ہو جائیں گے، اور اس میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ پھر یہی ہم جو ہے آبزرو کریں گے. تو یہ کچھ اس طرح کے گلوبل ریٹنگ یا چیک لسٹ ہم یوز کر سکتے ہیں. دس از اندر ایگزامپل آف دا گلوبل ریٹنگ اسکیل وچ از یوزڈ فار دا اسسمنٹ آف دا سینٹرل وینس کیتھرائزیشن. آپ یہاں پہ دیکھیں وی ہیو دس، یہ بھی ہے دس از دا چیک لسٹ فار دیٹ کیتھرائزیشن اینڈ دس از دا گلوبل ریٹنگ. تو یہاں پہ گلوبل ریٹنگ کو اگر ہم دیکھیں اس میں ڈیٹیل ٹو مچ ہے، لیکن یہاں پہ اس کی جو آبزرویشنز ہوگی وہ تھوڑی سی ڈیلیکیٹ ہوگی، اور اس میں سے بہتر جو ہے یہاں پہ اوورال ایبلٹی ٹو پرفارم دا پروسیجر. یہ ہی واز جو ہے ٹو مچ کمپیٹنٹ، یا جو ہے اس کی کمپیٹنسی جو ہے بہت پور تھی. تو یہ گلوبل ریٹنگ کی حیثیت ہوتی ہے which is lacking in the checklist. تو ایک اور بھی امپورٹنٹ کہ چیک لسٹ جو ہے یہ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے. اٹ از ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی ایز ویل ایز اٹس کاسٹلی بیکاز سیورل ایکسپرٹ جو ہے they have to sit and they have to make. تو اس لیے when we are going to select, we can select the pre-made checklist, but there should be a standardized checklist, verified checklist, and every checklist shouldn't be used because اس میں بہت سارے اس کی کنٹینٹ ویلیڈیٹی جو ہے، فیس ویلیڈیٹی جو ہے، کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی ہے، ایز ویل ایز اس کی ریلیبلٹی، اور یہ وہ ڈیٹیلنس اینڈ یہ تمام پرابلم جو اس میں آ سکتے ہیں. دیٹس وائی دیر شوڈ بی سلیکشن میں آپ نے چیک لسٹ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے جو evaluators they should be trained that how to use this checklist during the examination. If they are unaware of the checklist, if they are unfamiliar with the checklist, so obviously they will having some problem in while observing and while marking the patients. So they should have some familiarity and known, they should be known well, they should be trained for the checklist used. Rating scale, they commonly used for that behavior and performance. لیکن ہم نے ابھی بہت ساری باتیں کی کہ اسی ریٹنگ اسکیل میں ضروری یہی ہے کہ ایک تو اسٹینڈرڈ ریٹنگ اسکیل یوز کرنی چاہیے، انڈیپینڈنٹ ایگزامینر ہونی چاہیے، اور انڈیپینڈنٹ ایگزامینرز دے شوڈ بی ٹرین اینڈ the scale or the checklist which we are going to select, they should be verified by the expert. That should be having a high content validity, fast validity, and specifically the reliability, as well as there should be a standard checklist or rating scale used for that assessment. ایک پرابلم جو اکثر آ جاتی ہے یہ پوری تمام کریٹیکل اسکل کے اسسمنٹ میں ہوتی ہیں کہ they are very prone toward the subjectivity. Like اگر آپ MCQs میں دیکھیں so that's very clear. اتنے MCQs غلط تھے، اتنے MCQs ٹھیک ہے، ان کی اسسمنٹ ہو جائے گی. لیکن when we are assessing the student for their clinical skills, practical skills, تو وہاں پر پھر یہ ٹیچرس کے observations پہ، ان کے انٹرپریٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ how he is observing, how he or she is. تو یہ جو ہے ایک اس کی وجہ سے اس کی کنٹینٹ ہائی ہونے کے باوجود اس کی ریلیبلٹی بہت جو ہے کم ہوتی ہے. Acha, we are going to end this session. Inshallah, in the next short session, we will just combine all the different and the various assessment methods used for the clinical skills, including that objective structure clinical examination, then the short cases, long cases,
in the 360 evaluation, and then the mini CEX, and the last the portfolios, and that will be the end of today's session. We are थोड़ा सा 5-10 मिनट में मैं दोबारा से लिंक सेंड कर दूंगा एंड वी विल डिस्कस द वेरियस मेथड यूज्ड फॉर द ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे किस तरह हम कौन सी मेथड्स जो है हमारे पास अवेलेबल है जिसकी बेस पर हम अपने स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल स्किल्स जो है ये असेस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.